अजान इतना सक्सेसफुल आपके म्यूजिक करियर चल रहा था एंड मैं तो कहूँगी यूर अ गिफ्टेड म्यूजिशियन जस्ट लाइक योर डैड उनके भी अंदर एक गिफ्टेड म्यूजिशियन की क्वालिटीज हैं, आप में भी वो है। बेशक अगर आप कंपोज कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं या आप गा रहे हैं, यू डन सम मैग्निफिसेंट साउंड ट्रैक्स। परवाज़ जुनून को ले लें या सुपरस्टार को ले लें, परे हट लव को ले लें, आपने दम अस्तम के लिए भी कंपोज किया। तो आपको क्यों क्यों ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग की तरफ जाना है? ये आपका पहला ड्रामा है इश्किला, और इससे पहले हम सुन रहे थे कि आप एक फिल्म की भी आपने साइन अप की हुई थी, पटख दे, हानिया आमिर के साथ। उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसका क्या हुआ और वो हो रही है कि नहीं हो रही। मगर आपके अंदर क्या एक ख्याल आया कि मुझे अदाकारी की तरफ जाना है? Is it just a young thing, or is it? What's a young thing? A young and restless thing that I have to do it all. Yeah, do it all. I have to do it all. Dominate the world. Because आसान नहीं है, right? आप as a musician, most of all, आप कैमरे के पीछे हैं, और जब आप एक्टर होते हैं तो immediately you're in front of the camera. आपने एक physical transformation भी अपनी की है over the years, and I'm thinking it was prepping for yourself to be in front of the camera. Not. तो कई सवाल बहुत सवाल है, तो बहुत फायर कर दिए मैंने आप एक बार। मैं उनको एक एक करके जी थोड़ा सा असम्बल करता हूँ। हाँ, आई थिंक द फर्स्ट वन वुड बी कि ये फर्स्टली थैंक यू, आपको मेरा म्यूजिक पसंद आया। दैट इज समथिंग व्हिच इवन नाउ मैं अगर कहीं देखता हूँ कि कोई मेरा कोई गाना सुन रहा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल मोमेंट था जहां मेरा कहीं दिल टूटा और मैं कोई गाना बनाया मैंने, और मैंने अपने लिए बना के रख लिया कि वो कोई और भी सुन रहा है, वो कोई और किसी और भी अच्छा लग रहा है। अभी हमारे पास वो स्ट्रीमिंग एप्स होती हैं जिसमें लिखा आता है लाइव कौन सुन रहा है इस वक्त आपका गाना। लाइक लिटरली आता है कि these many people are listening right now. मैं देख के तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मेरा गाना किसने दिया इनको। फिर मुझे एहसास होता है कि अच्छा नहीं, ये तो रिलीज हुआ है। एंड but it's still very strange feeling because I have never made music from a standpoint of this is going to be on the charts and it's always been कि ये बनाया है, चार लोगों को प्ले किया, उन्होंने बोला हाँ यार ये अच्छा है, तुम्हें निकालना चाहिए, फिर डर के, और कोई कभी कभार मुझसे खींचा गया गाना कि बस और काम नहीं हो सकता इसमें, दे दो। So firstly music has been like that for me, और वही approach I brought to acting. As far as why acting and why not just stay in music, I think, as I said before, I don't plan things too much. Right. I do believe that when age is on your side, you should experiment to figure out where your strengths and weaknesses lie. The only difference is that being a child of the industry, you know about me experimenting. You can see me experimenting. Someone who maybe isn't in front of the public that manner, but the only way I can do it is by doing it. That's the only way to know that whether acting is for me or not, whether music is for me or not, whether screenwriting is for me or not, वो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं करूँगा। अब fortunately unfortunately करने में ये ऑडियंस की नजर में आता है, जहाँ नजरिया आता है कि ये दोनों चीजें क्यों कर रहा है, तीन चीजें क्यों कर रहा है। बिल्कुल। क्या मैं 35-40 पे सारी चीजें एक वक्त पे कर रहा हूँगा? Probably not. लेकिन मैं वो फैसला कायम तभी कर पाऊंगा यकीन से कि यही मेरी जर्नी है, by doing it once or twice. Right. और आप डरते नहीं हैं? नहीं. I don't think there is any shame in trying something and failing. Right. I'm not insecure that way. I have no fear in not being good at something that I tried at, so that I can in hindsight look back and be like, okay, I tried it, I wasn't good at it. Right. Other thing I was better at. I'll just focus on that. But on the lighter side, I always tease my mom and my dad, saying that I was a pig raised for slaughter, right? That जब बकरा ईद का बकरा होता है कि उसको पता होता है एक दिन मंडी जाना है इसमें। So I grew up with that thing कि वो बचपन से एक ही चीज देख रहे हैं। By एक ही चीज I mean the entertainment industry, whether it's my mom at a stage when she's acting, whether it's my father making music, whether it's my father acting, whether it's my mother directing, whether producing, it was all around you, right? So there was a divided interest in everything. So by virtue of how things happened, music ended up being the first thing I got into, and everything is very interconnected, right? Drastically interconnected. Of course. So that is one aspect. All the arts are, right? All of them are, exactly. So when I meet an artist who paints, for instance, right, I find tremendous similarities in the life we lead. The way our just because it is connected. However, it is also not connected. And I have no interest in being a jack of all trades, good at none type of thing. It is just that I'm also aware कि मैं
अभी 28 साल का हूँ हाँ और मैं ये एक्सपेरिमेंट और ये चीजें कर सकता हूँ just to find where that lies and what people want me to do as well. Like for instance, 4 साल I think 4 साढ़े 4 साल हो गए since परवाज़ जुनून came out. जी I do have a little bit of a better idea of musically what people want from me. वो मुझे पहले नहीं था वो कर करके ही हुआ है कि अच्छा यार मैं जब ये करता हूँ तो लोगों को नहीं पसंद, ये पसंद है. अच्छा not that मैं वो दूसरी चीज नहीं करूंगा, just that you start getting a better hang of things. With acting as well, it's when I saw in a very very shallow brief initial level, when I saw certain parts of Ishkila, people disliked what I did, certain parts they liked what I did, right so it allows me to be like, okay, how can I further improve the strengths ठीक है and or somewhat improve them as much as I can, right and how can I either negate the weaknesses and not even go on that side, right or improve them. But I'm very aware that that is one side. ठीक है That is one reason of why it is. Then there is the other side, where macroeconomics comes in, where industry dynamics come in. yes Because of where we stand today, there is a certain where Pakistan lies. I'm a huge advocate and believer in television in Pakistan. I feel that even if I was not acting, I believe the growth of Pakistani music through television itself is huge, can be much bigger than it already is. Right. Which is why in Ishkila we aim to do 2 OSTs. बिल्कुल दोनों ही बहुत खूबसूरत है मियां यार. Thank you so much. Thank you. So that was the reason, because I feel that there is जहाँ जहाँ हमारा क्या कहते हैं म्यूजिक सुना जाता है, वहाँ आपके ड्रामे का म्यूजिक बाय इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई मीन, और ड्रामे का म्यूजिक बहुत ज्यादा सुना जाता है. आपको हर हफ्ते मार्केटिंग मिलती है. So I just feel that to be able to grow that sector, right, where I have been entrusted with large film scores and soundtracks, I feel कि अगर उतनी तवज्जो हमारे ड्रामों के म्यूजिक पे दी जाती है, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर के तरीके से हो, चाहे वो गानों के तरीके से हो, there is a huge open door of opportunity lying there, right. And I think that that is something that interests me. So that is why coming towards the side, also there was also a logic behind कि ये क्यों करना है. Azaan, you spoke about mixed reviews that your performance got, और हमने भी शुरू में देखा, और we saw a gradual improvement in your performance. अब मैं और हसन भी ये डिस्कस कर रहे थे कि we don't know कि recordings जो हैं वो linear थी कि शुरू की पहले हुई और बाद की बाद में हुई, but there is a marked improvement by the time Azlan gets to where he is today, the last few episodes. आपको लगा was it a comfortable like zone for you when he's understanding himself and he's coming to terms with who he is, his connection with spirituality, with religion, वो थोड़ा अच्छा इंसान बनना शुरू हो गया, a kinder person, a more compassionate person, which I think is closer to who you are. And and you're not that abrasive and rude and person that Azlan is in the first half of the drama. So did you ease into that comfort zone, या आपको लगा कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही ऑर्गेनिकली बेहतर होती गई, क्या हुआ था? देखिए, critiquing myself is not my place to, so that I wouldn't. But did you? No, so I'm just coming to that, okay, right? Which is ke from a basic from a place of practicality, obviously जो काम मैंने कभी पहले किया नहीं था, वो रेगुलरिटी से करने में कंफर्ट जोन तो पैदा हुआ.